Hi everyone, welcome back to the channel guys. So in this video we are going to tell you that what we are launching. We are actually launching phase 1 plus phase 2 test series for RBI Grade B. We have been conventionally launching it after the notification in the past years, but there is a request from a lot of aspirants who need it right at this moment, and it is for them that we are launching it much earlier. तो इस सीरीज में टेस्ट सीरीज में क्या होगा, क्या बेनिफिट्स होंगे और ये किसके लिए है, एवरीथिंग आई वुड बी टेलिंग यू इन डिटेल एंड आई वुड बी शोइंग यू inside this test series also some sample test and know how the structure looks like. तो ये वाली टेस्ट सीरीज है जो आप हमारी वेबसाइट पे देख पाएंगे, RBI Grade B 2024 फेज 1 एंड फेज 2 टेस्ट सीरीज. अब ये किसके लिए है? First of all, I want to make it clear that people who are already enrolled into our gold or silver package, this is not for them. This is not for them because they have already got the test which we are providing in this test series. So please, if you are already a subscriber of gold and silver package for RBI Grade B, there is no need, absolutely no need to enroll into this phase 1 plus phase 2 test series. अब ये है किसके लिए? ये उन एस्पिरेंट्स के लिए है, बेसिकली दोज हु आर डूइंग सेल्फ प्रेप. तो बहुत सारे लोग हैं दोज हु आर डूइंग सेल्फ प्रेप. They are reading from their own sources, own websites, their own material, but at the end of the day, I think they would have realized, or they should realize, that it is not just about knowledge. हम पढ़ लें जितना मर्जी पढ़ लें, but knowledge के साथ साथ we also need to learn the art of application. I have seen a lot of students who study management theory, but in the exam they are not able to score marks due to lack of application. And along with application, there are other things which you actually need to develop over a period of time along with knowledge, like say accuracy, say learning to manage your time, learning to manage your anxiety, and all these can come by solving a lot of MCQs and not just by reading and gaining more knowledge. So knowledge needs to be converted to marks because that is what matters. That is what is going to give you selection. And in between, right, there are a lot of factors, as I've just told you, which needs to be managed. तो उनके लिए ये टेस्ट सीरीज है एंड आई एम श्योर दे आर गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट. और ये टेस्ट सीरीज उनके लिए भी बिल्कुल नहीं है जो बिल्कुल भी नहीं पढ़ रहे हैं. सो डू नॉट एज्यूम दैट जस्ट बाय डूइंग दिस टेस्ट सीरीज यू आर गोइंग टू क्लियर द एग्जाम. ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा, यू हैव टू हैव सम रिसोर्स, बट येस इट कैन गिव यू दैट एडेड एडवांटेज वंस यू हैव डन योर रीडिंग इन टर्म्स ऑफ प्रिपरेशन. सो इसमें मिलेगा क्या? सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज जिसमें फेज 1 फेज 2 दोनों के बहुत सारे MCQs आपको मिल रहे हैं. टोटल ऑफ अराउंड 14,000 MCQs you would be getting in this complete test series. First of all, you will get chapter wise quizzes. So for each of these subjects, quant, reasoning, English, FM, ESI, current affairs, you would get chapter wise or month wise quizzes as in the case of current affairs, right? So हर चैप्टर में आपको उस चैप्टर में जो नॉलेज गेन की है उसको इंप्लीमेंट करने का मौका मिलेगा. देन देयर आर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, राइट? You might have got previous year papers or questions, but when it comes to segregating them and doing them chapter wise, that gives you more clarity that okay, इस chapter में से ये आया है, ऐसे ऐसे questions आए हैं, right? So that you can prepare better. Then specially for descriptive, we are giving you chapter wise descriptive model question and answers. So for each chapter in finance, management and economics and social issues, for each chapter I am repeating, each chapter we are giving you a PDF which contains descriptive model question and answers. That is questions which might be asked in the exam. These are some model questions, or even if they are not asked, questions similar to them can be asked in the exam. Then there are monthly quizzes on current affairs, right? So whether they are reports, schemes, RBI notifications, your GA, ESI and finance current affair. So we are covering the entire ambit of current affairs, and each month you will get quizzes in these areas. एक क्विज रिपोर्ट पे मिलेगा, एक स्कीम पे मिलेगा, एक RBI नोटिफिकेशन पे मिलेगा और एक GA, ESI और फाइनेंस करंट अफेयर पे मिलेगा. एंड as I said, managing anxiety and learning to manage your time is very very important. आपको full length mock test भी दिए जा रहे हैं, 10 full length mock test for phase 1. Yes, and there would be sectional test also for quant, reasoning and English. ये भी आपको मिलेंगे, मैं यहाँ लिखना भूल गया था.
and 5 full length mock tests you will get each for FM, ESI and descriptive English. So these are the complete offerings. ठीक है, इसको पॉज करके दोबारा पढ़ लो, अगर समझ नहीं आई है टेक योर टाइम एंड अंडरस्टैंड इट. Ab, how is it going to benefit somebody who is doing self preparation? As I said, it is going to add lot of value. It widens your horizon. आपका scope widen होगा. अगर आपने कुछ नहीं भी पढ़ा है through MCQs you will get to know okay that this is what I missed, और आप वहां से learn कर सकते हैं या उसको आप further जाके कहीं net पे पढ़ सकते हैं. Revision, retention is a very important aspect and I think MCQs play very important role there. It helps you bring in more accuracy. I see people making some very silly mistakes. Either they do not read all the options or they do not go through. ये क्वेश्चन में not mention था, which of the following is not, ऐसा कुछ mention था वो नहीं पढ़ा है. तो इससे आपको क्लैरिटी मिलेगी आप कहाँ कहाँ छोटी छोटी गलतियां कर रहे हैं. It helps you prepare for the D-Day through time management, anxiety management, ठीक है, and it helps you overcome exam phobia and exam anxiety, the same point which I repeated earlier, and self evaluation. आपको पता लगता है कि आप कहाँ खड़े हो. You are not only able to self evaluate your performance but your performance in comparison to others. अपनी strengths and weaknesses भी आपको पता लगती हैं. So यही सारी चीजें हैं जो हमें knowledge के साथ एग्जाम को क्लियर करने के लिए चाहिए. This is what you are getting here. ठीक है, तो मैं थोड़ा कोर्स खोल के दिखा देता हूं कि आपको कोर्स में कैसा कैसा मिलेगा. सो दिस इज द कोर्स आई एम टॉकिंग अबाउट. ठीक है, सो इस कोर्स में बात करें तो यू विल गेट डिफरेंट फोल्डर्स. इट्स वेरी स्ट्रक्चर्ड. आपको क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश, जर्नल अवेयरनेस, फाइनेंस एंड मैनेजमेंट, इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज, सेक्शनल टेस्ट एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर फेज 1 एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट फॉर फेज 2, ये सारे अलग अलग फोल्डर्स दिख रहे हैं. सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर यू टू गो थ्रू ऑल दिस. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वांट का खोलूं, लाइक यहाँ पे कुछ ट्रायल भी हमने क्विजेस दिए हुए हैं. सो फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक द केस ऑफ चैप्टर HCF एंड LCM, सो वी आर गिविंग यू lot of quizzes here, right? Quiz 1, quiz 2, which you can attempt. I'll just take one test. So the interface that you get here is going to be exactly similar or almost similar to what you get in the exam. आपको यहाँ पे questions मिलेंगे. You can do next. You can mark your questions for review, right? You can see the answers, questions which are not answered in red, the questions which are answered in green. So this is like a mock of the actual environment that you will be getting in the exam. तो ऐसे ऐसे करके you can give this test and it will help you getting acquainted with the real time pressure, time management and the interface also. ठीक है, और यहाँ पे you can also report something if there is a technical issue or a content issue. You can raise a ticket and our team will take care of it. ठीक है, और जब आप इसको सबमिट करेंगे, दो आई एम नॉट अटेम्प्टिंग मच क्वेश्चन, यू विल गेट डिटेल्ड एनालिसिस. आई विल जस्ट टेक यू थ्रू. अब मुझे इसके आंसर निकालने का टाइम तो नहीं है यहाँ पे, बट लेट्स सबमिट दिस क्विज, राइट. सो जैसे ही आप सबमिट करेंगे यू विल गेट अ डिटेल्ड एनालिसिस ऑफ योर परफॉर्मेंस, कि आपके किस टॉपिक सब टॉपिक पे कितने क्वेश्चन गलत हुए. ठीक है, ओवरऑल आपकी रैंकिंग क्या है, क्वेश्चन को एवरेज टाइम क्या लिया आपने. सो इट इज अ डिटेल्ड रिपोर्ट विच यू विल फाइंड हियर. आई अगेन नॉट गो इनटू द डिटेल ऑफ दिस. तो वो आपको इट्स लाइक वेरी जेनरिक थिंग विच हैज टू बी अवेलेबल फॉर योर एनालिसिस. तो ऐसे ही अगर मैं अब आपको पीछे जाके दिखाऊं, दैट वाज अबाउट क्वांट. सिमिलरली यू विल गेट इन रीजनिंग एंड इंग्लिश. ठीक है, अभी मैं फेज 2 का एक सब्जेक्ट ले लेता हूं लाइक FM. सो हेयर ऑल्सो, right, you will get quizzes, quiz 1, quiz 2, quiz 3, right? So we are giving you sometimes multiple quizzes on one chapter at different difficulty levels, low, medium, high, and then descriptive model question and answers are also given to you. ठीक है, तो यहाँ पे भी you will find it कि ये काफ़ी value add करेगा आपकी preparation में. So here you will get questions, 10 markers, and you will also get the answers, though I will suggest you that you write your own answers then match with the answers written here. तो इसी तरह आपको 10 markers मिलेंगे, right? Then after that you will get 15 markers जो कि आपको 600 words में लिखने होते हैं एग्जाम में. So you will get these complex questions also. तो इस तरह से there are lot of questions. मतलब मैनेजमेंट में तो ये बोलूँगा अगर आप ये पढ़ गए तो क्वेश्चन सीधा आपको यहीं से आ जाएगा. ठीक है, सो बस दैट्स इट. आई थिंक दिस इज व्हाट आई वांट टू टेल यू. बाकी आप कोर्स की अगर ऑफरिंग्स और डिटेल में देखना चाहें तो अगर आप नीचे जाएंगे यहाँ पे, ठीक है,
यहाँ पे बहुत डिटेल में आपको सारी ऑफरिंग्स बताई गई हैं, विच यू कैन रीड एंड फाइंड इट बाय योर सेल्फ वेदर दिस सूट्स योर नीड्स और नॉट. बाकी आई वुड ऑल्सो लाइक टू टेल यू दैट इन केस यू आर न्यू टू द RBI Grade B preparation, ये कॉम्प्रिहेंसिव गाइड है फॉर RBI मैनेजर विच टेल्स यू एवरीथिंग अबाउट RBI एज एन ऑर्गेनाइजेशन, promotions, hierarchies, department, and it's a good source for preparing for RBI Grade B एग्जाम. यहाँ पे आपको डिटेल्ड बुक लिस्ट एंड रिसोर्सेज मिल जाएंगे, डिटेल्ड सिलेबस मिल जाएगा एंड डिटेल्ड बुक लिस्ट, सिलेबस एंड PYQs, these three things. तो आप इसको आज ही डाउनलोड कीजिए. द लिंक टू डाउनलोड दिस इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. फ्री है, कुछ चार्ज नहीं है. इसको डाउनलोड कीजिए, पढ़िए. यू विल गेट मोर क्लैरिटी एंड आई थिंक दैट कैन एक्ट एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन. बाकी टेस्ट सीरीज के अलावा वी ऑल्सो हैव आवर फ्लैगशिप कोर्सेज, गोल्ड एंड सिल्वर पैकेज. गोल्ड पैकेज इज बेसिकली अ कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स जिसमें आपको फेज 1, फेज 2 इंटरव्यू सारा कुछ मिलेगा. दैट्स अ वन स्टॉप सोल्यूशन, right? There is no need to read anything outside the course. It's a self-sufficient course. और सिल्वर पैक में फेज 2 और इंटरव्यू की पूरी डिटेल्स मिलेंगी, बट फेज 1 सिर्फ GA कवर्ड होगा. क्वांट रीजनिंग इंग्लिश विल नॉट बी कवर्ड देयर. सो डिपेंडिंग अपॉन योर नीड, इफ यू थिंक यू आर गुड इन क्वांट रीजनिंग एंड इंग्लिश, यू कैन ऑप्ट फॉर सिल्वर पैक, अदरवाइज गो फॉर द गोल्ड पैक. एंड मन में यही आता है कि यार इनका कंटेंट कैसा होगा. सो देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो. क्लिक ऑन दैट लिंक, चेक आउट द सैंपल मटेरियल एंड सी फॉर इट द क्वालिटी बाय योरसेल्फ. क्वालिटी तो है ही, साथ में कॉम्प्रिहेंसिवनेस है. आई मीन वी आर नॉट लिविंग एनीथिंग कि आप ये बाहर से पढ़ लो, उस किताब से पढ़ लो. सो कॉम्प्रिहेंसिवनेस इज समथिंग दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लव, बिकॉज इसके बाद आपको कुछ नहीं पढ़ना है. एंड यू नीड कॉम्प्रिहेंसिव थिंग टू एक्चुअली क्लियर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम. इक्का दुक्का पढ़ के ऐसे नहीं होगा कि थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लिया, थोड़ा सा वहां से पढ़ लिया. अ कॉम्प्रिहेंसिव थिंग इज रिक्वायर्ड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट आई वांटेड टू टेल यू एंड बेस्ट ऑफ लक. तैयारी करते रहिए. एग्जाम अब बहुत टाइम नहीं बचा है. आई थिंक इट्स हाई टाइम कि आप अपना बेस्ट 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 देना शुरू कर दें. थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय.